इट्स शालिनी, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल पिक्सी डस्ट। सो एज यू ऑल नो कि समर जो है वो अभी अपने पीक में है एंड इस टाइम पे जितने भी सारे वर्किंग वुमेन होते हैं उनके लिए मेकअप कैरी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। हमको पूरे सुबह से लेके शाम तक ऑफिस में होना पड़ता है एंड देन गर्मी के कारण एंड स्वेट ये सब के कारण जो मेकअप होता है बहुत ही हैवी एंड स्टिकी हो जाता है। बट एट द सेम टाइम हमको थोड़ा बहुत मेकअप की भी ज़रूरत होती है। सो यस, आज के वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि कैसे अब बहुत ही नॉर्मल एंड बहुत ही सिंपल लाइट वेट मेकअप कैसे कर सकते हैं ऑफिस जाने के लिए, कहीं पे वर्क पे जाने के लिए और डेली बेसिस के लिए भी आप ये मेकअप कैरी कर सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू नो हाउ टू डू योर मेकअप इन समर्स देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। First, I'm applying this sunscreen from Lotus. It contains SPF 50। सनस्क्रीन हमारे फेस के लिए, बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली समर्स में। सो ये जो सनस्क्रीन है ये कम्प्लीटली जेल फार्मूला का है। मेरी स्किन नॉर्मल टू ऑयली स्किन है, तो जो जेल बेस्ड सनस्क्रीन होते हैं वो ऑयल्स को कंट्रोल करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस जेल इट विल एक्ट एज ए प्राइमर। एटलीस्ट जो सनस्क्रीन हो आपका वो SPF 50 हो। यूजुअली आई डोंट यूज़ फाउंडेशन इन समर्स डे टाइम में। आप BB क्रीम और CC क्रीम यूज़ कर सकते हैं, वो थोड़े लाइट वेट होते हैं फाउंडेशन से, बट आई यूजुअली डोंट यूज़ मच एंड फॉर डे टाइम आई यूज़ दिस क्रीम। दिस इज़ लैक्टो कैलामाइन एंड जो लैक्टो कैलामाइन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। ये एक अलग सा ग्लो देता है स्किन को एंड दिस इज़ फॉर ऑयली स्किन। इसके दो वेरिएंट आते हैं, आई थिंक वन नॉर्मल स्किन के लिए एंड वन इज़ फॉर ऑयली स्किन। तो ये जो लैक्टो कैलामाइन है वो आपके ऑयल्स को कंट्रोल करता है। So now for eyes I'm using this concealer from Maybelline Fit Me range in the shade Cafe and I will use a very little bit of this product. I don't want कि कोई भी प्रोडक्ट हमारे स्किन पे heavy look दे, just अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए। आपके फेस को इंस्टेंटली ग्लो प्रोवाइड करेगा। To set the base, I'm going to take this compact cum foundation from Lakme 9 to 5. This is their primer plus matte powder foundation. जैसे कि मैं foundation अप्लाई नहीं कर रही हूँ, so I need little bit of coverage plus matte effect. So for that I'm using this compact powder जो कि foundation like powder foundation का काम करता है। So now if you want little bit of color on your eyelids then you can use this palette from Maybelline. This is their nude palette. I will use this color from this palette. This is the brown color and daytime में usually I carry like a normal light brown color so that वो ज़्यादा अपने eyelids पे भी नहीं दिखता है, प्लस हमारे eyelids पे काफ़ी सुंदर दिखते हैं। बहुत ही थोड़ा सा अप्लाई करूँगी मैं। So for Kajal I'm using this Kajal from Falsies। तो मैं कोई भी लाइनर का यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज लाइनर डे टाइम पे बहुत ज़्यादा हैवी लुक दे देता है। सो मैं जिस इस काजल का यूज़ करूँगी, थोड़ा सा लाइन करूँगी एंड देन आई विल स्मज इट आउट विद द हेल्प ऑफ स्मजर। Now to add some color to the cheeks, I will use this blush from Maybelline Flush Creator in the shade Afterglow. I'm taking a very little amount. Now for the eyes, I'm using this mascara from Maybelline, the Falsies Pushup Drama. In the dark, we are nothing more than dust. Search but you. So for lipstick, I'm using the shade from Revlon in the shade Sultry. This is a semi matte finish lipstick and ये बहुत ही lightweight है and इसका color भी काफ़ी Indian skin tone को suit करेगा। This is like a pinkish brownish color. So this is the final look.
I hope you liked the video, and if you like the video and this makeup look, then please subscribe, like and share. And also don't forget to press the bell icon, because whenever I post the video you will get notified. Follow me on my Instagram handle. I will mention all the links in the description box below. So do check out. Till then, bye bye.